गेट माय पॉइंट? इससे हम कहते हैं कि आप ये जो थोड़ी थोड़ी इमेजरी लाते हो, थोड़ी थोड़ी करके इमेज के जरिए आप मेन जो थ्रस्ट है आपकी स्टोरी की उस तरफ। जी, so children, I know if you can just pick this point, he's expressed it very well. And डॉक्टर चैटर्जी हमें बता रहे हैं कि आप जब कहानी लिखते हो बेटा, तो आपने ये सोचना है कि जो आप सोच रहे हो, आप तो सोच रहे हो, मगर वही चीज जो है वो आप रीडर को कैसे दिखाओगे। तो उस चीज को आपने, जब आप उसे मूवी में देखते हो तो आप देख पा रहे हो, पर जब आप लिख रहे हो आपके शब्दों में उसे देख पाना जरूरी है। तो इसे एक टेक्निक कहा जाता है, डॉक्टर चैटर्जी हमें बताएंगे, जिसे हम कहते हैं शो डोंट टेल। मतलब आपने बताना नहीं है कि आपके कैरेक्टर ने सेब खाया है, आपने दिखाना है कि कैरेक्टर ने सेब खाया है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक, डॉक्टर चैटर्जी, इफ यू कैन जस्ट टॉक अबाउट इट क्विकली। या ये बड़ी एक पैनोरेमिक स्टाइल में भी कर सकते हो। आप लोगों ने किंग लियर पढ़ा होगा, है ना? किंग लियर की स्टोरी आपको पता है ना? In the climax scene, you see the entire sky is overclouded. वो लिखते हैं शेक्सपियर, पूरी वो सीन बताते हैं कि बहुत आंधी आ रही है, बारिश हो रही है, एंड किंग लियर बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना? तो ये जो आंधी, ये जो बारिश, ये जो इंक्रीमेंट वेदर, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट इट एक्सेंचुएट्स द इफेक्ट ऑफ द स्टोरी। किंग लियर की अंदर की जो टर्मोइल है उसको बाहर की जो सीन्स से आपको और इसको दिखाते हैं। ब्यूटिफुल। ये सोच के अगर आप इमेजरी यूज करो तो स्टोरी और पॉइगनेंट हो जाता है, इट बिकम्स मोर लवली। ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि बाहर जो आप दिखा रहे हैं वो आपके कैरेक्टर के अंदर के टर्मोइल को, उसके अंदर की जो कंफ्यूजन है, उसके अंदर की जो जद्दोजहद है, उसको भी बाहर लाने में जो आपकी सेटिंग है वो हेल्प करती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर चैटर्जी। मैं कविता जी से पूछना चाहूंगी, इसी को आगे ले जाते हुए, देयर आर लॉट द स्टोरीज दैट यू जज, do you think there was a balance of dialogue and storytelling in that, Kavita ji? And would you like to emphasize on dialogue, tell our children the importance of dialogue in story writing? या फिर एक कहानी जिसमें एक भी डायलॉग नहीं है, तो आपको क्या लगता है, is it okay to write a story without dialogue? We all love stories with dialogues actually, because we feel that conversations are something that has come very naturally to us. So हमको हमेशा ऐसा लगता है कि एक स्टोरी में डायलॉग होना जरूरी है, पर और एक चीज है इसके अंदर, and that thing is कि not every story necessarily has to have a dialogue. Suppose if it is a story that is more situation based or settings based, then it will be more of a descriptive kind of a story wherein you are describing things and all that. You are trying to focus more on the whole atmosphere, environment. Then I don't think the dialogues are not important, but when you are focusing on stories which have characters and characters which converse with each other, a lot of uh, character, going in and coming out along with the main thing, then of course वहाँ पे dialogues की बहुत बहुत जरूरत पड़ती है. And when I have been looking at all the stories that you had sent to me, a few places I felt that the dialogues were put up, but they were not in a very smooth way. In the sense कि आप जब dialogue present करते हो तो ensure कि आपकी spacing हो, एक डायलॉग और दूसरे डायलॉग के बीच में स्पेसिंग हो, दे आर इन इन्वर्टेड कॉमास, दे आर विद इन दैट. तो ये जो चीजें हैं ना, आई हैड नोटिस दैट सी बच्चे, किड्स आर ऑल यंग एंड दे आर ट्राइंग आउट. सो आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं. पर एज अ राइटर, व्हेन यू कीप ऑन राइटिंग रिपीटेटिवली, you have to realize that there are certain things to be incorporated when you put it in writing, so that it becomes easy for the reader to read the whole dialogue one after another. ठीक है? तो वो स्पेसिंग की जरूरत पड़ती है. ऑफ कोर्स ये सब बात में एज ए एडिटर काम करते हैं इस पे, पर एज ए राइटर वो भी जरूर पड़ती है कि आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको इजी पड़ेगा वो फ्लो. सो
having a dialogue is extremely important, but also ensuring its spacing, the way it is presented, and the जी flow of the dialogues one after another. It has to be smooth like a conversation. ऐसे नहीं कि जबरदस्ती नहीं होना चाहिए कि हाँ दोनों फिट कर रहा है उसको. जी It has to be smooth flowing. So राइट that is the where the readers will get engrossed कि हाँ नेक्स्ट क्या बात करेंगे क्या और क्या बात करेंगे और क्या होने वाला है. ये बात That है way. हाँ जी। तो बेटा आपको समझ आया, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। एक तो कहानी में डायलॉग होना चाहिए पर एक बैलेंस्ड वे में होना चाहिए, यही नहीं कि एक के बाद एक आ रहा है। आपको उसकी स्पेसिंग करना बहुत जरूरी है। एंड अ स्टोरी हैज टू बी अ गुड बैलेंस ऑफ डायलॉग भी होना चाहिए उसमें, और आपकी स्टोरी टेलिंग भी होनी चाहिए। सिर्फ एक मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टोरी नहीं होनी चाहिए कि बस हमने कहानी बता दी। तो मैं क्विकली एक हमारी लास्ट उस पर मूव करना चाहूंगी। डॉक्टर चैटर्जी आपसे शुरू करूंगी कि हम तो अब ये कहानियां हमारे पास आ गई है, हम एडिटिंग की प्रोसेस शुरू करेंगे, मगर हम रियली चाहेंगे कि हम बच्चों को इस एडिटिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, क्योंकि आई थिंक बिना एडिटिंग की प्रोसेस जाने आप एक फुल फ्लेजेड राइटर नहीं बन पाते हैं। तो डॉक्टर चैटर्जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप सेल्फ एडिटिंग के लिए आप बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि अगर हम उनकी कहानी उन्होंने एक बार लिख ली तो उसे भेजने से पहले अपने आप अपनी कहानी को बेहतर बनाने के लिए आप अपने लेवल पे कैसी सेल्फ एडिटिंग कर सकते हैं? ग्रेट। अच्छा, उससे पहले मैं 2 ही मिनट लूंगा। उससे पहले एक बता दूं कि डायलॉग हमेशा जरूरी नहीं है। एक स्टोरी है जो एट्रीब्यूट किया जाता है कि ये शायद हेमिंगवे ने लिखा है ना। मैं आप सुन पा रहे हो मुझे? यस Oh, यस यू ऑडिबल। it's attributed to Hemingway, right? Just 6 word story. 6 words है: for sale, baby shoes, मैं बैग भी पिएगा ना कि never won. प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जी सॉरी। दोबारा बता देता हूँ। It's a 6 word story. सिर्फ 6 शब्द में एक स्टोरी एट्रीब्यूट किया जाता है, शायद इसको हेमिंगवे ने लिखा है, राइट? द स्टोरी इज फॉर सेल, बेबी शूज, नेवर वॉर्न। स्टोरी खत्म, है ना? कितना पॉइग्नेंट स्टोरी है। अगर सोचोगे तो पता चलेगा हाउ डज दिस 6 word स्टोरी, जस्ट 6 words, राइट, शिट योर हार्ट हार्ट। नाउ कमिंग बैक टू द एडिटिंग थिंग, मैं 5 पॉइंट बताना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1, जैसे ही आप फर्स्ट ड्राफ्ट में फुल स्टॉप डालते हो उसे मत भेजो। लेट इट थॉ फॉर 2-3 days, एटलीस्ट मिनिमम 2-3 days उसे वैसे ही छोड़ दो। इसे हम कहते हैं कूलिंग पीरियड, है ना। अक्सर होता है कि हम फ्लो में लिख जाते हैं और इमीडिएटली लिखने के बाद हमें लगता है कि हमने मास्टरपीस लिख लिया, इससे बेहतर हो नहीं सकता है। ऐसा नहीं है। जस्ट 2-3 days उसको रोक छोड़ो, then you take up and then remove the hat of being a writer, wear the hat of an editor or better still a reader. आप एक रीडर बनो, रीडर के हिसाब से उसे देखो, ठीक है? तब पता चलेगा आपको कहाँ खामियां है, ये खुद जान जाओगे कि प्रोबेबली यहाँ कुछ जम नहीं रहा है, यहाँ एक और कैरेक्टर की जरूरत है, यहाँ ये रिडंडेंट है, वी कैन रिमूव दिस पोर्शन, राइट? ये आप कर लो, दैट इज स्टेप 2। स्टेप 3, लैंग्वेज पे ध्यान दो। पहले बिल्कुल स्पेलिंग वेलिंग पे मत ध्यान दो, दैट्स द लास्ट थिंग दैट यू शुड डू, है ना। लैंग्वेज पे ध्यान दो। ये वर्ड शायद यहाँ फिट नहीं हो रहा है, ये वर्ड को चेंज करो, दोबारा और एक वर्ड लाओ। ये एनालॉजी जो मैंने लिखा है शायद डजंट फिट हियर, और आई कैन इवन बेटर इट, राइट? यह है 3rd। 4th, आप स्टोरी की फ्लो पे एक बार ध्यान दो कि फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड डज द स्टोरी फ्लो लाइक अ रिवर, राइट, और हैज इट बीन स्टक समवेयर? तो ये जरा देख लो। लास्ट इज प्रूफ रीडिंग कर लो, पूरी प्रूफ रीडिंग कर लो और देन भेजो। तो 5 पॉइंट ये रहा। एक तो 2-3 दिन छोड़ो बिल्कुल इसको, इसके बारे में सोचो ही मत, बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है ना। 2-3 दिन बाद इसे लो, दोबारा पढ़ो,
from the point of view of a reader, then you will know what are the what are the more things that you need to put it in. ठीक है ना? ये जो 5 पॉइंट आप याद रखो, that is the advice that I can give you. Thank you. Gee, thank you. I think, I hope our audience, our young children are listening to this, because editing is a very, very important aspect of writing. और आप कभी भी अपनी कहानी को सेल्फ एडिट किए बिना बाहर ना भेजें. When you've written it, उसे 2-3 दिन के लिए छोड़ दें. Let it lie, let it cool down, you know, and let it marinate, I would say. जैसे हम मैरिनेशन करते हैं ना, खाना बनाते हैं, तो let it marinate, I would say. और एक बार मैरिनेशन हो गया, फिर उसके बाद कम बैक टू इट, दोबारा पढ़ो एज अ रीडर. जैसे डॉक्टर चैटर्जी ने बोला, अगर आप रीडर हो और उस कहानी को पढ़ रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा, क्या इस कहानी में कोई कमी है? Then find that out. अपना दोबारा से उस कहानी की एडिटिंग करो, and only then when you are satisfied, send it out. So I think we will, there are a lot of things. स्टोरी राइटिंग तो इस तरह का है कि हम बात करने बैठे तो वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, इतने सारे पॉइंट्स होते हैं. But I think before, I think now we should move to the audience. Beta, if any of you have questions, please raise your hands, and we will ask you to unmute yourself, and then you can ask your question. So please raise your hands, so that we know if you have a question. Somebody was asking me, chat में पूछ रहे थे, question कब पूछ सकते हैं? This is the time. Raise your hand, ask your questions, ask your doubts. Yes, please. RPSS original, sorry, यही नाम आ रहा है. पूछिए बेटा, unmute yourself and ask your question. Good morning, ma'am. Good morning. अगर if you are okay with sharing your camera also, video, we'll be happy. नहीं तो आप please carry on. Okay, ma'am, I will. हाँ जी बेटा, Hope पूछिए. it's been open. Yes, please tell us. Okay, ma'am. Actually, ma'am, I have not only one question. I have 4 or 5 questions regarding the story. Mostly, I am right about the आप science अच्छा fiction. पॉलिटिशियन बनोगे, सांसद अच्छा बन लोगे. Why, sir? we'll discuss that later. चलो, पूछिए. shoot your. Mostly, I am wrote about the science fiction, including the imagination. But I just want to know how to give twist in the particular segment of the story, because I don't like the story that is plain and simple, that start from a simple page and ending on a simple page. I just love to create twist, 2-4 create. That's people just love the twist. That's, oh, now what happened next? Oh my God, this happened. So this is a attention paying trick or method by the story writer to the story reader. And Right. and ये I क्वेश्चन के also आंसर पहले मैं दे दूं. ये क्वेश्चन के okay आंसर. जी डॉक्टर चैटर्जी, आप. ट्विस्ट वाली जो चीज है ना, आई विल रिकमेंड यू टू रीड 2 ऑथर्स. जी अगर सर आप शॉर्ट स्टोरी लिखते हो और ट्विस्ट बिल्कुल एंड में लाना चाहते हो, जी इसकी टेक्निक सीखने के लिए आप ओ हेनरी पढ़ो. can you speak again? ओ हेनरी, ओ डॉट Okay, हेनरी, ओ हेनरी okay sir. राइटर है, उनको पढ़िए ये टेक्निक सीखने उनको के आप Okay, पढ़िए. जी Most of his stories have this, that twist at the tell, right? तो ये टेक्निक के बारे में और कैसे करते हैं ये बिल्कुल आप जान जाओगे. ठीक है ना? okay. अच्छा, सेकंड जो And पूछना another था जी कि हर मोड़ में कैसे एक ट्विस्ट लाते हैं, जी जैसे कि यूजुअली थ्रिलर्स में, फिल्मों में हम देखते हैं, है ना? तो जी ये सर. अगर आप करना चाहते हो तो आप स्टीफन किंग पढ़ो. Okay sir. You ठीक है? show in the previous Yes, meeting. he is a master storyteller. I tell you, I can give you 2-3 other names also, but ज्यादा दे दूंगा तो अपना पढ़ाई कब करोगे? तो जी सर. एक एक ही दे रहा हूँ, इसलिए स्टीफन किंग पढ़ो, है ना? So that you know how do you give a twist. Okay लीनियर sir. नहीं, कहीं ना कहीं मोड़ आ जाता है ना? आप यही चाहते हो ना? हाँ. Yes sir. ये दो किताबें पढ़ो, आप खुद जान जाओगे. एंड एक्चुअली Okay sir. बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया डॉक्टर चैटर्जी. ये मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगी बेटा कि अगर आप कुछ भी कर, चाहे आप अगर पोएट्री लिखना चाहते हैं तो पोएट्री की जो बहुत बहुत लोग हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस लोग हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत किताबें निकाली हैं, बहुत फेमस हो चुके हैं, उनकी पोएट्री पढ़िए. अगर आप कहानी लिखना चाहते हैं तो मास्टर स्टोरी टेलर्स को लेके आइए, उनकी कहानियां पढ़िए.
reading will teach you more than any other class or any other lecture can. So I think reading पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपका होना चाहिए अगर आप राइटर बनना चाहते हैं. वील कम बैक टू यू बेटा. अगर कोई और बच्चा है जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप नीचे से हैंड रेस कर सकते हैं अपना, पर आप अपना एक और सवाल पूछ लीजिए जो कविता जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो आंसर करेंगी. ओके मैम. मैम, एक सवाल मेरा ऐसा है, कहानी जो सभी लोग लिख रहे हैं, बट हेलो, कैन यू लिसन मी? हाँ जी, हाँ, सुनाई दे रहा है बेटा. Actually, I want to just write stories about the superhero and super villains, but it's just I want to create my own superhero. But I am just confused that this kind of story anybody can read or not. If I can write a superhero story, just like this competition, I have to write on a history topic. So I can create a superhero, including the factor that the history. So that's are selected or not, that people love these kind of stories or not, because I think the people love the story that kind have the motivational. They just find about the world story, and in the last they need some moral. Okay, this story means this. But in India, especially where we can write some books, so nobody can read much comics and love these kinds of supernatural things. But I really want to do this. So Okay. how it's can I can Kavita do ji, it. he And wants to write. another thing, हाँ जी, एक मिनट. yes, Kavita ji, another he thing wants to is that I can write a story. This because of your competition, you can recognize me that I am in this meeting, because I couldn't write it, so I'm not here. I just writing in my books and it just closed on my table. Okay. But how can I exert my hard work of writing this, and how can I become a personality that everybody knows about me? That's Because a long process. I I think just that's want to I want just write to 1, 2, 3, 4, 5 over one story. That's anyone read and just wait for what's okay. happening next part. That's a very long process, but I will request Kavita ji to answer that first part of your question. कि Okay, सुपर हीरो की स्टोरी अगर वो लिखना चाहते हैं, so will he find audience for Yeah. it and all of those other things. For superhero stories, there are a lot of superheroes that, from historical perspective, from mythological perspective, and also from the fiction angle, India has emerged with a lot of authors. You must have heard of Amish Tripathi. You must have heard about this thing, different writers who have combined all the mythology aspect into fiction. But I would ideally recommend you to read Shatrujit Nath's Vikramaditya Veer Gatha. This is an English book and it's a whole series. But when you're talking about superhero, the way he has developed the character of King Vikramaditya into a superhero, along with his he had in his court this gem of persons, which included men and women, and they are also made into sub superheroes. So the way he has developed the whole character, it will be a very good reading for you, because he has taken into consideration a lot of research. कौन से टाइप के वेपन्स यूज करते हैं, हर एक सुपर हीरो कौन से टाइप के वेपन यूज करते हैं, right up to the cover page they have shown that kind of clothes, what kind of enemies they are dealing with, what kind of background as far as the fictionalized situation is. तो इसके हिसाब से जो कैरेक्टर डेवलपमेंट पूरा करा है ऑफ किंग विक्रमादित्य एज वेल एज हिज अदर जेम्स इन द स्कोर, it will be a wonderful read. So once again, for your this thing, Vikramaditya Veer Gatha by Shatrujit Nath. I recommend that whole series for you. So that will be a very good reading point. वैसा नहीं है. Apart from that, I would recommend this particular writing activity book. Writing Writing is fun. activity book. This is think for we- everyone. This is we till share 14 the- years of age. आराम से आप कर सकते हो ये. जी, we'll share the links in the group, I think later on. आपसे लेके judges से we'll share the links. So basically, I think you've got your answer, beta. There are superhero Okay, books ma'am. very much in demand. You just have to build your character strongly, right? Okay, I'd ma'am. like to now ask RNG to please ask his question, and we can any of you who'd like to answer. RNG. Ma'am, I have a question. Like, I write stories which have too much of suspense and dramatic twists, and so people have got
like they always tell that your stories are good, but they are always in a like a suspense and the thrilling mode. So they all sometimes tell that we also want some comedy or happy stories. So I don't know how to write comedy stories. I would be very grateful if I could get some suggestions about that. Uh, anyone, Dr. Chatterjee, I Kavita ji, anyone would like to? This I- is one is the book that if you can, I would recommend to you. Write your own funny stories. It is by James Campbell and Rob Jones. This has got activities in it wherein you can. They have given the whole the same information how to write and also page write inside of the pages. So you can develop that funny aspect of writing or humorous type of writing along with this particular book. डॉक्टर चैटर्जी आप भी कुछ कह रही थी? नहीं, मैं थोड़ा दुविधा में हूँ. What's the name? Aryanjit Show. आर्यनजीत. Aryanjit, you are writing suspense stories. That's what you told? Yes, sir. And the problem is there is too much suspense. Yes, है sir. ना? Beta, you have a bright future in Bollywood. They are now looking for thrillers. देख लो, है ना? But sir, But different people have different aspects. It's like my parents tell that people are already so much stressed in their life. You are stressing them more by creating such suspense story. So maybe So you can have one or two characters in your story who offer that हाँ, element of humor. हाँ, देखो ऐसा है कि depends on whether you would like to put a comic character in or not, would solely depend on the broad nature of the story that you are writing. If you think that it becomes too heavy and that needs a comic relief, इसको हम कहते हैं, है ना? तो maybe a character you can put in who will put in some funny words, or who will do some funny acts, or who will do something which is not expected in that situation and create humor. है ना? ये हो ही सकता है. Even in best of the suspense stories also, you have some comic relief. ठीक है ना? ये like कैसे in आप करोगे? Feluda, I have read stories. The Feluda series, there have been characters who create the funny Jatayu. thing. Jatayu, yes. Yes, Jatayu But does all the funny that thing acts. only I can't do in my own story. I try a lot, but things get messed up. No. You can do it. Initially, everything gets messed up, I tell you. है ना? छोटे बच्चे जब खेलते हैं ना तो खिलौना टूटता है, उसको टूटना चाहिए, है ना? बट धीरे धीरे आप सीख जाओगे. द वेरी फैक्ट दैट यू हैव दिस इन माइंड एंड यू हैव read, I'm so very happy that you have read Satyajit Ray Feluda series, right? So you have noticed the Jatayu character, right? So because there is a Jatayu, the heaviness is counterbalanced. So maybe you can put in a character like Jatayu, or if there is no space for more characters, in the narration also, you can put in couple of words, couple of sentences which are of comic nature. I think this answers your question mostly. Actually, we are running short of time, but we have a lot of questions coming up. So before मैं आगे की questions, before I take up the other questions, I would like to ask our jury, our guests today, that will it be possible for you to give us another 20-30 minutes for these questions, or do we need to ask the children to send them as messages? No. Take 20 minutes and let's talk face to face. Okay, that is great. I'm sorry, actually, I have to be on another meet, so I Hanji. will not be able to. I understand. So maybe we will, stop this session after another 5 to 6 minutes, and then we will share another link to rejoin. So then Kavita ji will be leaving us then, and Dr. Mrinal, very kind of you if you can stay back so we can just finish the questions now. So I would love to stay back for another probably 20-25 minutes. Thank you so much. Thank you so much. Lavanya, why don't you bring your question and we can have Kavita ji, since she'll be leaving us, answer your question. Lavanya, please unmute yourself, and if you can share your video with us as well. Good morning, ma'am. I'm Lavanya.
I'm not sure if I can share my video right now. Is That's that okay. okay? Okay. Ma'am, I have been reading stories lately, and I've seen how powerful the words of the author can be, such as Rick Riordan and Tahiri Mafi. When they write in first person or third person perspective, they write it in such a way that it can even make you cry. It can make you feel exactly what the specific character is feeling, like secondhand embarrassment, or maybe even make you cry or laugh. So I was wondering, how do you get the skill to write that way to make the reader feel such powerful emotions just through words? Okay. Okay, Kavita ji, Lavanya wants to ask that how can we, maybe write in first person perspective or third person, but make the reader feel the emotions of the character. Well, to put in emotional elements in the story is not easy. Okay, it is quite hard because what happens is writers is you are feeling the emotions, but when you are trying to put it in down, you are not able to kind of articulate it properly. If you are able to do it, then it's fine. Like if you are able to express it well in words, then it is fine. It's good. But a lot of times what happens is that हम खुद ही इतने इमोशनल होके वो लिखते हैं तो हो सकता है कि वो बराबर पेश नहीं होता. Right? The point here is to have a kind of a buddy interaction. For example, if there is a situation in the story which is very emotional, okay, आप लिख लेते हो, maybe you share it with your buddy or somebody in the family or somebody just to and tell them, just hear this part of my story and see their reactions, see how they're responding to that particular situation or that particular part of the story. If the response is what you actually want, then maybe you're going to be very successful in dealing with that particular portion of emotional uh, response eliciting writing. Okay, so that is one part that you can always have it as the thing. बाद में आप maybe you can polish it through some editor or something. But the first point is have a kind of a check or a test on somebody. The second part is how you can develop the art of or the skill of that through writing a lot and a lot of poetry also. Because in my experience, I've seen that people who write poetry just for the sake of writing. I'm not saying write poetry for competitions or anything. Just for the sake of writing, if you attempt to write poetry, you are able to find out words or the symbolic words, sometimes hidden words, sometimes very direct words to express your emotion. So that is another trick to get your emotional writing skills up. I think, I Thank you, think ma'am. Lavanya. I think Lavanya, that's very well put by Kavita ji that, poetry writing, I think definitely helps us. It's more emotive. The language is more emotive compared to story writing, where we have to often stick around to, we have to stick around to facts. We can't really divulge into too many things. But character, मुझे ऐसा भी लगता है कविता जी that अगर ये पहले बच्चे first person POV follow करेंगे, तो उसमें एक इमोशनल एस्पेक्ट लाना इजी हो जाता है एंड देन ग्रेजुअली यू कैन मूव टू द सेकंड पर्सन और सॉरी द थर्ड पर्सन पीओवी और फिर आप ओमनिसिएंट जिसे हम कहते हैं पीओवी उस पे ग्रेजुअली मूव करें. तो आई थिंक फर्स्ट पर्सन पीओवी से शुरू करने से इट्स इजियर टू काइंड ऑफ मेक इट मोर इमोटिव. Yes, yes. First person is much easier. But a lot of times what happens, the story demands that it has to be from third person हाँ जी, perspective. तो ट्रू, आपको पहले first person में लिख के फिर उसको change करना पड़ता है. So राइट, it doesn't look like a first person perspective. Oh, that requires a lot of drafts actually.
Hanji. for that to come up with. Hanji, you Yeah. have to keep redrafting. I agree. So I think all the children who'd love to join us for the third session and have questions with us, we'll be starting it in another 5 minutes. Dr. Chatterjee, we will look forward to you joining us as well. And Kavita ji, many thanks from our side for sharing all these points with the children, for clearing their doubts, and for giving us such wonderful nuggets of wisdom about storytelling and story writing. We hope we can have more sessions with you where the children can benefit from your experience. Thank you so much. So, Thank you so much. It was lovely talking to all of you. thank you. Have So, a nice day. thank you. We join again in another 5 minutes. You can leave and then rejoin immediately the moment I share the link. Thank you.